Good evening, doston. So let's begin with today's session. Look at the first question. Consider the following statements about Subhash Chandra Bose Apada Prabandhan Puraskar. First statement says it is an annual award announced on the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. Absolutely correct. Second statement says the award is open to both Indian and the foreign individuals and the institutions working in disaster management. This statement is absolutely incorrect. Why? Because this award cannot be granted to the foreign individuals, right? Rest is correct. So third statement is in case of an individual winner, the award carries a cash prize of rupees 5 lakh. Again, correct. So two statements are correct here, 1 and 3. Question is how many of the above statements is oblique are correct? So only two statements are correct here. B for Bombay would be the correct answer. So why we picked up this question? There is a strong reason. Recently, Sikkim State Disaster Management Authority as an institution and Lieutenant Colonel Sita Ashok as an individual were granted Subhash Chandra Bose Apada Prabandhan Puraskar 2026, right? So the award is only for the Indian nationals and the Indian institutions and not for the foreign entities. Do remember. Now let's move on to the next question. With reference to the Commission for the Air Quality Management, consider the following statements. The first statement says it is a statutory body established under the Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas Act of 2021. Absolutely correct. CAQM is a statutory body, means it is set up through an act of parliament. Second statement is the directions and orders issued by CAQM are advisory in nature. No, they are not advisory in nature. The orders passed by the CAQM shall be legally binding in nature. So second statement is incorrect here. Question is, how many of the above statements is oblique are correct? So only one would be the correct answer. Now look at the explanation part. The CAQM report says that secondary particulate top cause of Delhi winter pollution, right? So meta-analysis finds transport, biomass, burning, and dust among the other major contributions for the Delhi air pollution, right? You can see the composition here. It is to be chaired by the government official of the rank of secretary or the chief secretary. He will hold the post for 3 years or until he attains the age of 70 years. It will also have 5 ex officio members who are either chief secretaries or secretaries in charge of department dealing with the environment protection in the state of Delhi, Punjab, Haryana, Rajasthan, and UP. And 3 full-time technical members are also there, and the 3 tech members from the non-government organizations, right? So technical members from the Central Pollution Control Board and Indian Space Research Organization and Niti Aayog. So do remember the structure of CAQM. Chaliye, now let's move on to the next question. So look at the question number 3. With reference to the governor's address to the state legislature, consider the following statements. Statement number 1 says, Article 176 Clause 1 of the Constitution mandates that the governor shall address a state legislature at the beginning of the first session every year. Absolutely correct. It is the constitutional mandate. It is a constitutional duty of the state governor. See, governor is not a political man, right? Governor is the head of the state, not a political man. So second statement is under Article 163, the governor is bound by the aid and advice of the Council of Ministers led by the Chief Minister while performing the constitutional functions, except in matter where the Constitution provides discretionary powers. Again, correct. Question is, which of these statements given above is oblique are correct? So both these statements are correct here. So C for Calcutta would be the correct answer. Now, look at the explanation part why we picked up this question. There is a strong reason. Outs by the governors test constitutional limits. It has become quite common, particularly in the opposition-ruled states like Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, right? So, recent walkouts by the governors during the inaugural sessions of the state legislative assemblies in opposition-ruled states, that has become like a debatable topic. Is that understood? Now, let us understand what Dr. B.R. Ambedkar had to say on this issue. So in Ambedkar's vision, the governor has no independent functions. He is a constitutional head, not a political actor. He represents the people of the state as a whole, not any party or ideology. Clear? So I hope you guys understood that why we picked up this question. Now let's move on to the next question. With reference to the Madras hedgehog, consider the following statements. The first statement says, the Madras hedgehog is endemic to peninsular India and it is primarily found in
Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, and parts of Karnataka. Absolutely correct. Madras hedgehog is found in peninsular India. Absolutely correct. Second statement says it is classified as endangered under the IUCN Red List due to the large scale habitat loss. See, the second part is correct, but not the first one. It is not an endangered species. So second statement is incorrect here. Third statement says the Madras hedgehog prefers dry habitat such as scrubland, thorn forest, and grasslands. This is absolutely correct. So 1 and 3 both are correct. How many of the above statements is oblique are incorrect? अब यहाँ question क्या पूछा हुआ है? Incorrect. So only one. तो यहाँ पे देखिए क्या correct answer हो जाएगा? Only one. Now let's move on to the explanation part. So you can see here it is classified as least concern, not endangered. अब यहाँ देखिए आप इस आर्टिकल में जरूर यहाँ पे लिखा हुआ है conservation of the endangered species of the Madras hedgehog during the financial year of 25-26. तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने यहाँ पे 20.5 लाख रुपीस एलोकेट किए हैं इसके conservation के लिए. Right? So I hope you guys understood that why we picked up this question. Now let's move on to the next question. So look at the question number 5. Consider the following statements about the European Union. First statement says the European Union was formally established by the Maastricht Treaty in 1993, transforming the European Economic Community into the European Union. Absolutely correct. Second statement says the euro is the official currency used by all the European Union members. No, that's not correct. It is used by around 18 or 19 countries, right? Not by all the European Union countries. The third statement says the Treaty of Lisbon, which came into effect on 1st of December 2009, introduced Article 50 for withdrawal and established the new voting mechanisms like the qualified majority voting. See, that is absolutely correct. So before 2007 and 2009, like you could join the European Union, but exit clause was absent. So what happened through the Treaty of Lisbon? The exit clause was added. क्लियर? तो पहले आप शादी कर सकते थे, डिवोर्स नहीं हो सकता था. तो अब यहाँ पे एग्जिट क्लॉज भी आ गया और एग्जिट क्लॉज कब आया? ये आया 2007 में थ्रू द ट्रीटी ऑफ लिस्बन. इसके बाद में आपने देखा होगा ब्रेक्सिट हुआ था. तो ब्रेक्सिट में यूनाइटेड किंगडम ने किस आर्टिकल को ट्रिगर किया होगा ट्रीटी ऑफ लिस्बन के? आर्टिकल 50 of the Treaty of Lisbon. So question is, which of these statements given above is oblique are correct? So 1 and 3 both are correct here, not the second one. So only 2 statements are correct here, right? And why we picked up this question, there is a strong reason. Recently, India signed a free trade agreement with the European Union. Last 2 decades से discussions चल रहे थे. Last 2 decades के discussions के बाद में finally इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया है. आज ये अनाउंसमेंट किया है पीएम मोदी ने और इसे मदर ऑफ ऑल द डील्स जो हैं रेफर किया गया है. सो डू रिमेंबर. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. Which one of the following categories of the fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है. हमने इसको नोइंगली पिक किया है और इसको नोइंगली पिक करने के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है. और जानते हैं हम ये स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है? ये स्ट्रॉन्ग रीजन है रिसेंटली अभी जो आपने देखा है कि यूजीसी गाइडलाइंस आई हैं 2026 में और कहीं ना कहीं जो यूजीसी गाइडलाइंस है जो न्यू रेगुलेशंस है इसने कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया है. हाईली डिबेटेबल टॉपिक है और इसका अल्टीमेट मोटिव क्या है? अल्टीमेट मोटिव है एससीज एंड एसटीज एंड जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन है कॉलेज कैंपसेस में यूनिवर्सिटी कैंपसेस में उसको अबॉलिश करना. बट समवेयर इस मेन इशू को एड्रेस करते हुए कहीं ना कहीं ये जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 है थोड़े से डिस्क्रिमिनेटरी हो जाते हैं, राइट? तो इसी वजह से हमने इसको पिक किया है. सो क्वेश्चन इज which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? So डिस्क्रिमिनेशन जो है अनटचेबिलिटी का अबॉलिशमेंट कहां पे दिया गया है? सो आर्टिकल 17 इट अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, राइट? अब आर्टिकल 17 किसका पार्ट है? फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 वी हैव राइट टू इक्वालिटी. अंडरस्टूड? सो राइट टू इक्वालिटी should be the correct answer. So D for Delhi would be the correct answer here. So look at the explanation part. Right to equality from Article 14 to Article 18. It guarantees equality before the law and prohibits discrimination based on religion, race, caste, sex or place or birth. Article 17 specifically abolishes untouchability and forbids its practice in any form. Right? So do remember. Chaliye. Now let's move on to the
next question. So look at the question number 7. In December 1930, the three freedom fighters entered the Writers' Building of Calcutta, which housed the Secretariat, and shot dead Lieutenant Colonel N.S. Simpson, the British Inspector General of Prisons, who was known for subjecting Indian political prisoners to brutal torture in custody following the commotion. One of them consumed potassium cyanide, while others two shot themselves to avoid capture. The three freedom fighters referred in the passage above are, these are Benoy Basu, Badal and Dinesh Gupta. So D for Delhi would be the correct answer, right? अब यहाँ देखिए ये बहुत ही फेमस केस है दिसंबर 1930 का, इसलिए हमने इसको पिक किया। अभी रिसेंटली इस पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। और यहाँ एक बात और याद रखिएगा, यूपीएससी का काफी फेवरेट रहा है क्वेश्चन, लाइक मास्टरदास सूर्यसेन, गणेश घोष और लोकनाथ बाल। तो ये किस में शामिल थे? ये शामिल थे चिटगोंग आर्मड रॉबरी केस में, राइट? तो ये यूपीएससी बार बार पूछते रहा है, काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहे, चाहे वो यूपीएससी सीडीएस हो या फिर एनडीए हो या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो या फिर वो सिविल सर्विसेज हो। सो बी अटेंटिव, राइट? So you can see the explanation part. There is a strong reason ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें इसका जिक्र किया गया, इसलिए हमने इसको पिक किया है। बिनॉय बासु, बादल गुप्ता एंड दिनेश गुप्ता carried out the attack on the Writers' Building in December 1930 to assassinate Lieutenant Colonel N.S. Simpson, notorious for his brutality against Indian political prisoners. One of them consumed potassium cyanide and the others two shot themselves to avoid capture as described in the passage. क्लियर? अगर हम अदर्स की बात करें तो सूर्य सेन, गणेश घोष, लोकनाथ बाल, लीडर्स ऑफ द चिटगोंग आर्मड रॉबरी केस, राइट? याद रखिएगा 1930। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So look at the next question, question number 8. When was the Direct Action Day observed by the Muslim League? See, cabinet mission जब आया था 1946 में, so objective of cabinet mission was pretty clear. Cabinet mission was not in favor of partition of India. अब एक तरफ थे गांधी, और गांधी को अखंड भारत चाहिए था, ठीक है? तो गांधी जी को चाहिए था अखंड भारत, गांधी जी किसी भी कीमत पे पार्टीशन के फेवर में नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग को हेड कर रहे थे, और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान से कम कुछ मंजूर नहीं था। कैबिनेट मिशन ने कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना का जो डिजायर, उसका जो ड्रीम था, उसको हर्ट करने का काम किया। अब क्योंकि कैबिनेट मिशन यूनाइटेड इंडिया के फेवर में था, पार्टीशन प्लान तो था नहीं है, so somewhere Muhammad Ali Jinnah decided to go for the Direct Action Day, and it was 16th of August 1946, right? A black day in the Indian history. Clear? तो यहां से कम्युनल राइट्स की शुरुआत होती है, पर्टिकुलरली फ्रॉम कोलकाता, और उसके बाद भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो है वो कम्युनल राइट्स होते हैं, चाहे वो लाइक बॉम्बे हो या फिर वो नोआखाली हो या फिर बिहार या फिर यूनाइटेड प्रोविंस, प्रेजेंट डे यूपी। क्लियर? So the purpose of the day was to press the demand for a separate nation of Pakistan and to demonstrate the League's rejection of a united India. Now let's move on to the next question. Question number 9. Consider the following statements regarding the recent Indian Army restructuring and modernization just after the Operation Sindoor. So first statement says, Rudra brigades are integrated brigades combining infantry, armored and artillery and unmanned aerial vehicles and logistics for the independent multi-terrain operations. Absolutely correct. So Rudra brigades क्या है? Basically एक जो है वो mixed brigade होगी जिसमें infantry, armored, artillery, UAVs और logistics ये सभी शामिल होंगे, so that they can fight in all the odd conditions. Difficult terrain में fight कर सके, इसके लिए यहाँ पे रुद्रा ब्रिगेड्स को प्रपोज किया गया है। So look at the second statement. The Bhairav Light Commando battalions are specialized rapid strike units of about 250 soldiers trained for the specific missions under various commands. Again, correct. The third statement says the artillery units are being modernized by adding drone batteries. The Vyastra unit with loitering munitions and anti-drone systems for the deep strike capabilities. Again, correct. So Rudra brigades, Bhairav Light Commando battalions, and the Divyastra batteries. So which of these statements given above is oblique are correct? So all these statements are correct here. D for Delhi. 1, 2, 3 would be the correct answer. Look at the explanation part why we picked up this question. So recently an article was published in Economic Times regarding the defense modernization. So this article discussed Rudra, Bhairava, Divyastra and Shakti Ban. How the Indian Army is preparing for the next generation warfare
थ्रू द कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे शक्तिबान का जिक्र नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देख लीजिए शक्तिबान ड्रोन रेजिमेंट्स। So the Indian Army is raising 50 to 20 Shaktiban regiments equipped with swarm drones, loitering munitions, and the long-range UAVs means unmanned aerial vehicles for strikes from the 5 to 500 kilometers. Right? Now let's move on to the next question. तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से लिया है हमने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, absolutely correct. Increase the marginal standing facility rate, no, that's not correct. Cut the bank rate and the repo rate, this is absolutely correct. Now try to understand the meaning of the expansionist monetary policy first. इसका मतलब क्या है? इन केस ऑफ द रिसेशन या फिर हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आरबीआई मतलब कोई भी फेडरल बैंक चाहेगा टू एनहेंस द लिक्विडिटी इन द मार्केट। अब अगर लिक्विडिटी को एनहेंस करना है तो क्या आरबीआई रेपो रेट को एनहेंस करेगी या उसको कट करेगी? उसको कट करेगी। तो अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करती है पॉलिसी रेट को, तो इससे क्या होगा? इससे मार्केट में लिक्विडिटी एनहेंस होगी। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहां अगर हम बात करें टू कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, एसएलआर। अब बेसिकली एसएलआर क्या है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को एक सर्टेन पोर्शन अपनी नेट डिमांड एंड लायबिलिटी का, इसको लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। लिक्विड फॉर्म का मतलब यहां पे कंप्लीटली कैश नहीं है, इसका मतलब है कैश प्लस या फिर गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं। तो इस फॉर्म में रखना होता है अपनी नेट डिमांड एंड लायबिलिटी का एक सर्टेन पोर्शन, जो कि आरबीआई डिसाइड करती है, उसको किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, ताकि इमीडिएट जो शॉक्स हैं उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। अंडरस्टूड? इमीडिएट डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। अब अगर इसको एनहेंस करेगी तो बैंक्स का कैश कम हो जाएगा उसके पास में, बैंक्स को उसको रिजर्व रखना पड़ेगा क्योंकि वो तो मैंडेटरी है आरबीआई के अकॉर्डिंगली। राइट? तो अगर आरबीआई उसको कम करती है, कट करती है, तो क्या होगा? जो एक्स्ट्रा कैश है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के पास में आ जाएगा। अब ये इसको लेंड कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। थर्ड स्टेटमेंट इज टू इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब एमएसएफआर क्या है? एमएसएफआर बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन है विद द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल है। अब इस टूल के थ्रू ओवरनाइट जो आपकी लिक्विडिटी क्रंच है, तो ओवरनाइट लिक्विडिटी क्रंच को एड्रेस करने के लिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे अगर कोई ओवरनाइट लिक्विडिटी क्रंच आता है तो आप इसको बोरो कर सकते हैं यहां से आरबीआई से। मिनिमम कितना होता है? मिनिमम होता है 1 करोड़, एंड देन फिर उसके बाद में 1 करोड़ के मल्टीपल्स में होता है। इज दैट अंडरस्टूड? एंड क्वाइट ऑब्वियस है कि वो रेपो रेट से ज्यादा होगा। क्लियर है? तो अब अगर आरबीआई इसको इंक्रीज करेगा तो क्या बैंक्स के पास में लिक्विडिटी जो है वो बढ़ेगी या कम होगी? अगर इंक्रीज करेगा तो बैंक्स के पास तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी ना। इज दैट अंडरस्टूड? तो इंक्रीज क्यों करेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा अगर उसको एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना है तो। सो सेकंड स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट हियर। क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 and 3। सो सी फॉर कैलकाटा वुड बी द करेक्ट आंसर। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? यहां पे पूछा हुआ है वुड इट नॉट डू, तो इसमें से क्या नहीं करेगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर वुड बी बी फॉर बॉम्बे। राइट? तो ये काम नहीं करेगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। अब अगर इसकी जगह में यहां पूछा होता कि इसमें से कौन से एक्शंस वो करेगा, तो क्या आंसर हो जाता? 1 and 3। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, आपको इससे काफी हेल्प मिल रही है। और हम इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे यूपीएससी 2026 तक के। और आई एम प्रिटी श्योर कि ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए। तो अपने फ्रेंड्स, अपने अपने कंपेनियंस तक इसको पहुंचाइए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।